So it when it affects the lungs, we call as pulmonary tuberculosis, and when it affects the other body organs, then we call as extrapulmonary sites. So TB can infect the lymph nodes. It can also infect genitourinary tract, bones and joints, meninges, intestine, and skin. Okay. So now there are two types of, or we can classify the tuberculosis into broadly two types. That is the primary tuberculosis and the secondary tuberculosis. Okay. So please very carefully understand the difference between a primary tuberculosis and the secondary tuberculosis. So in primary infection, the progression to clinical disease in a previously unexposed immunocompetent person. It depends on the three factors. So पहले तो primary infection क्या है? Primary infection is that the person has never been come in contact with the bacteria, means never previously exposed with that bacteria, and the person for the first time in her or his life get the infection. That is known as a primary infection. Okay. So, primary infection, it depends on three factors. What are those three factors on which primary infection depends? How many number of bacteria or organism has been inhaled by the person, infecting dose and the virulence of these organisms. And third, the development of antimicrobacterial cell-mediated immunity. Okay, so means on these three factors, it depends whether if the person comes in contact with the bacteria, whether the person is going to develop an infection and later on disease. That depends on these three factors. But what is primary infection? The primary infection is that when the person comes in contact with this bacteria for the first time in his or her life, then we call it as primary infection. Then you may ask, ma'am, what is secondary infection? Then secondary infection is that when the person is already exposed in his or her life previously with that bacteria, but no more having an active disease. She or he might having a bacteria in his or her body होगा, लेकिन क्या होगा, वो डॉर्मेंट होगा और फिर से उसको वापस से जो है वो डिजीज के सिम्टम्स रिलैप्स कर जाएं, उस केस में हम उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं. ठीक है, या फिर उसको दोबारा से इन्फेक्शन हो जाए उस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस का. एक बार हो गया था, द पर्सन फील्स दैट ही इज ओके और शी इज ओके, एंड देन अगेन इट रिलैप्स. सो दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन. प्राइमरी इन्फेक्शन, आपको कभी टीबी नहीं हुआ, बट यू व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद द टीबी and you develop the infection or you develop the disease, then it is known as a primary infection. Okay. So primary infection, as I have told you, it depends on how many number of organism is being inhaled by that person, the virulence of that organism, and depending upon the development of antibacterial cell mediated immunity. Because one important thing is that when the bacteria it affects our body, the antibodies, they don't have much role played in the immune system. These are it elicits the cell mediated immune system in our body, and primarily which is being mediated by the T helper cells, okay, which stimulate macrophages to kill the bacteria basically. Okay, so when this bacteria it infects our body, it stimulates the Th1 helper cells, which again stimulate the macrophages to eat these bacteria or to destroy or kill these bacteria. So that's how the body get rid of this bacteria. And एंटीबॉडी डेवलपमेंट जो है वो इतना नहीं होता है. ऑफ कोर्स इट विल डेवलप, बट उसका इन्वॉल्वमेंट जो है फाइट में अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन इज कम्स ऑन लेटर ऑन and very less as compared to the cell mediated
इम्यूनिटी। ठीक है। So primary tuberculosis disease that develops in previously unexposed person, and it is almost always begin in lung. जब primary tubercular infection होता है तो as I told you कि preference जो है वो बैक्टीरिया lung को infect करता है. So when the in bacteria it is inhaled by the person, it implanted in the distal air spaces of the lower part of the upper lobe or the upper part of this lower lobe. तो वो दैट इज बीन फाउंड कि उसका जो है एक इंक्लिनेशन है इस रीजन से. ओके. सो व्हेन इट इन्फेक्ट्स द लंग, gray white inflammation with a consolidation develop which called as gonorrhoeus. Okay. Gonorrhoeus क्या है? Gonorrhoeus is the inflammatory part of our lung tissue. उसको मेडिकल लैंग्वेज में gonorrhoeus बोलते हैं. Please carefully please be attentive and carefully listen this term, that is gonorrhoeus. It is associated with this disease, that is tuberculosis. And what is this gonorrhoeus? It is basically the gray white inflammation. What is this inflammation? This is a tissue which has been infected by the bacteria, and this type of complexes formed in our lungs. इस तरह का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे लंग्स में फॉर्म हो जाता है जब बैक्टीरिया जो है हमारे टिश्यूज को इन्फेक्ट कर देता है. ठीक है. एंड इट विच ऑफन केसिएट्स मींस केस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जहां पर सेंट्रल टिश्यू एक्चुअली जहां से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था. तो जहां पर बैक्टीरिया ने स्टार्ट किया था इन्फेक्शन, दैट टिश्यू स्टार्ट अंडरगो निक्रोसिस, यानी डेथ होने लगती है, टिश्यू की डेथ होने लगती है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज आवर इम्यून सेल्स दे स्टार्ट किलिंग दोज सेल्स. वो क्या करते हैं? वो उन सेल्स को ही मारते हैं जिन सेल्स में बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्ट कर दिया है. सो दैट टिश्यू बिकम स्टार्ट बिकमिंग डेड. तो जब वो डेड होने लगता है तो वो वाइट दिखता है. और उसके अराउंड क्या होते हैं? उसके अराउंड बिकॉज ऑफ दिस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, other immune cells they start gathering around this dead tissue, because this dead tissue it also containing the active bacteria. So this is one of the process of containing this bacterial infection. को जो है क्या करना है? उसको कंटेनमेंट जोन बना लेते हैं. कौन? हमारे बॉडी सेल. So here you can see epithelioid macrophages. So the macrophages they turn into bigger cells which we are called as epithelioid macrophages. So basically you understand that when they infect our lung, they start destroying our tissue, lung tissue, which we called as, and that dying or dead tissue undergoing necrosis is being surrounded by these immune cells, and this is known as gonorrhoeus. What is gonorrhoeus? I again repeat, that is the dying tissue necrosis, the tissue which is undergoing necrosis, death हो रही है उस tissue की, and surrounded by our immune cells, multinucleated giant cells, macrophages. So this whole complex, it is known as gonorrhoeus. Sometimes what happens in this complex, जहां पर ये tissue dead हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि नियर बाय लिम्फ नोड में भी इन्फेक्शन फैल जाता है. ओके. सो नियर बाय लिम्फ नोड इज आल्सो कम इनटू दिस कॉम्प्लेक्स which is known as Gowan complex, when the limb tissue nearby lymph node is also infected within the lung. तो उसको हम Gowan complex बोलते हैं, Gowan complex or Gowan complex. So here you can see in this structure, ये वाला जो photograph है, in this red arrow, here you see this cheesy substance. तो बेसिकली जब टिश्यू हमारा डाई होने लग जाता है और निक्रोसिस होने लग जाता है, जब बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है इस टिश्यू को, तो वो इस तरह से चीजी अपीयरेंस हो जाता है. द डाइंग टिश्यू लुक लाइक दिस वाइट चीजी सब्सटेंस,
And here they are showing that one of the lymph node is also comes under this infection. Okay, so this whole complex is formed, which is known as Ghon complex. हम Ghon complex कहते हैं. ठीक है. So Ghon focus is the necrotic tissue plus surrounded by the our immune cells, that is Ghon focus. If that Ghon focus is also having the nearby lymph node, then we call is that Ghon complex. So these two terms are medical terms associated with this disease progression. Okay. I hope I am clear. If I am not clear, you can unmute yourself and you can ask me कि मैम हमें समझ नहीं आया. I'll again try to explain and make you understand. Yes, मैम class? Yes. मैम Hmm. Yes. मैम मैम गोन कॉम्प्लेक्स Hmm. बता दो। Hmm. Yes. और एक आवाज आ रही थी गोन कॉम्प्लेक्स, फिर से बता दें. और एक आवाज आ रही थी. मैम प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली होगा ना कि फर्स्ट टाइम पे जब इनकाउंटर होगा उसका बैक्टीरिया के साथ, तभी ट्यूबरकुलोसिस स्टार्ट हो जाएगा. हाँ, उसको इन्फेक्शन हो जाए या उसको एक्टिव टीबी डिजीज हो जाए, तो उसको दोनों में से कोई भी चीज हो जाए, उसको पहले फर्स्ट कभी टाइम इन्फेक्शन नहीं हुआ. हाँ, उसको पहले कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, जिस पर्सन को जो कभी कांटेक्ट में नहीं आया बेसिकली बैक्टीरिया के, वो कांटेक्ट में आ जाए. ठीक है. ये सब. एंड मैम जो वो गूड फोकस है ये मैम, ये हम्म बेसिकली टीबी के जो सेल्स होते हैं, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, इनकी वजह से होता है जो सेल्स डाई कर जाता है. हाँ, हमारा ये सेल्स जो हैं ये हमारे लंग सेल्स हैं. यस मैम. लंग के टिश्यू है. लंग टिश्यू दे स्टार्ट डाइंग ऑफ. व्हाई दे स्टार्ट डाइंग ऑफ? क्योंकि जिन सेल्स को उन्होंने इन्फेक्ट किया है, उन्हीं सेल्स को हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है. तो ऑफकोर्स जब हमारे बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होंगे, वहां पर निक्रोसिस होने लग जाएगी, यानी टिश्यू मर जाएगा, डेथ हो जाएगी टिश्यू की. तो बेसिकली गोवन फोकस क्या है, हमारा लंग्स का डेड टिश्यूज है, जो हमारी निक्रोटिक. बॉडी पे, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जिन सेल्स को मारता है, बेसिकली सेल्स की डेथ का रीजन होता है. हाँ, एग्जैक्टली. सेल मीडिएटेड है तो क्या कर रहा है वो, एक्चुअली बैक्टीरिया क्या करता है, अभी आगे समझाती हूँ मैं. आई एक्सप्लेन यू आगे चल के. अभी फिर उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना. ओके. So this is the pathophysiology of this bacteria. What this bacteria does, here you can see this is a primary pulmonary infection. If you look at this diagram, that is the A वाला diagram अगर आप देखोगे, this is primary pulmonary tuberculosis, यानी फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन जब होता है, पहली बार इंसान जो है, द पर्सन हैज कम इन कॉन्टैक्ट विद द बैक्टीरिया. एंड व्हाट इज हैपनिंग इन 0 to 3 weeks. 0 to 3 weeks में सपोज अ पर्सन फर्स्ट टाइम कम इन कॉन्टैक्ट विद एन अदर पर्सन हु आर हैविंग दिस एक्टिव डिजीज, और उसके कफ या स्नीजिंग से वो कॉन्टैक्ट में आ गया और उसको बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया. ही और शी इनहेल्ड द बैक्टीरिया इनटू lungs. So what this bacteria do, it goes into the lung, and when it goes into the lung, where it is going to infect, it actually eaten by these alveolar macrophages. You know, in our lungs there are alveolar macrophages, है ना. इम्यूनोलॉजी में पढ़ा है ना हमने, मैक्रोफेजेस होते हैं, ये शायद आप आगे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ा होगा आपने ये इम्यून सिस्टम के बेसिक सेल्स और बेसिक कंपोनेंट्स. तो macrophages which are present in our lungs, they recognize these bacteria and they engulf these bacteria. फॉरेन है तो हमारे बॉडी जो है फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. so once the person get infected, these macrophages, and when it goes into the lungs, these macrophages they engulf this bacteria. So binding is being done by these mannose-capped glycolipid receptors. So these bacteria are very smart. Macrophages think they are eating the bacteria, but basically this bacteria is targeting these macrophages itself. उनको ही टारगेट करता है, वो उन्हीं को इन्फेक्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल HIV, it infects what? CD4 positive cells. They target our immune cells. That's why it's very tough disease to tackle. Okay. So likewise, this bacteria, it also targets actually the macrophages. So there is a binding and receptor. That's how this bacteria actually infects our body cells. So it utilizes this mycolic acid
this membrane kept glycolipid coat to enter into these macrophages. Okay, so macrophages thinks they are very smart, they are engulfing the bacteria, and actually the bacteria is very smart, he is entering into the macrophages. Macrophages, they doesn't know that bacteria is very smart, he is not able to eat these bacteria, उसको पता ही नहीं है कि वो खा नहीं पाएगा इन बैक्टीरिया को, और मे बी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा इन अदर words I should say. So once it enters into the alveoli, it has been engulfed by these alveolar macrophages. Okay. So what is the mechanism? How these macrophages they destroy these bacteria? So they form phagosomes, है ना? Phagocytosis से तो क्या करते हैं? Vesicles बनते हैं, phagosomes. So phagosomes once inside into these macrophages, they fuse with the lysosomes. These macrophages they produce the vesicles which are known as lysosomes, which have digestive enzymes, which has the capability to degrade the proteins of these bacteria, which is being engulfed in the phagosomes, right? So what these actually bacteria they does, they are very smart and they inhibit the fusion of this phagosomes with the lysosomes, which have these enzymes which can destroy these bacterial proteins. Okay, so there is an endosomal manipulation, उसको कहते हैं endosomal manipulation by what? By these bacteria, they manipulate. Okay, so what they do actually at the molecular level, they arrest the maturation of these endosomes. देयर इज अ प्रोसेस, क्या होता है कि एंडोसोम फॉर्म हो रहे हैं, फिर वो मैच्योर हो रहे हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को हिंडर कर देता है. कौन हिंडर कर देता है? दीज बैक्टीरिया. दे स्टार्ट once they infect the macrophages, they start secreting a protein, so which hinders this all mechanism. Which mechanism? The fusion of these lysosomes जिसमें वो engulf हुए हैं, and the endosomes which is being produced by what? These macrophages. Okay, so there is no fusion of macrophage with the lysosomes. So when the macrophages, macrophage and endosomes or say vesicles, they are not able to fuse with these phagosomes. Okay, तो जब lysosomes जो है phagosomes से fuse नहीं होंगे तो क्या होगा? They are not able to destroy this bacteria. So this bacteria is very smart. Okay, जो मैकेनिज्म है मैक्रोफेजेस का डिस्ट्रॉय करने का बैक्टीरिया, उसी को हिंडर कर देता है वो. ओके, उसी को इनहिबिट कर देता है वो, एंड दैट्स हाउ इट स्लोली स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इनटू दीस मैक्रोफेजेस. अब ये आप देख रहे हो इस वाले ग्रुप में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? अनचेक्ड बेसिलरी प्रोलिफरेशन, बिकॉज नाउ इट इज आउटसाइड ऑफ, बिकॉज इट इज इनसाइड ऑफ आवर बॉडी सेल, मैक्रोफेजेस के अंदर हो रहा है, तो वो आराम से डिवाइड करते रहते हैं. बिकॉज इम्यून सिस्टम जो है इट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी एंड समथिंग इज डिवाइडिंग, बिकॉज इट इज डिवाइडिंग इनसाइड द सेल. जब वो आउटसाइड प्रेजेंट होगा देन ओनली द अदर्स our immune system will get alarmed. Okay, there is some infection in our body. So what these bacteria, these are very smart, they enters into our cell like the HIV infections, it enters into our cell. So they enters into our immune cells and they start dividing here. How they start dividing here is that it inhibits the fusion of these lysosomes with the phagosomes, which is having these bacteria. Okay, so these are known as bacteremia with seeding of multiple sites. इसको हम कहते हैं bacteremia with seeding of multiple sites. So that's how this bacteria is capable of evading our immune system. तो 0 to 3 weeks में क्या होता है? 0 to 3 weeks में यही होता है. और जब किसी को इन्फेक्शन होता है टीबी का, तो 0 to 3 weeks में वो पॉजिटिव नहीं आता है. ऑल द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया, उसको इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया का, द बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड द पर्सन्स लंग्स, बट वेयर it reaches to the within a cell, macrophages में है, and it is dividing within a macrophages, and of course the bacteria is still not infect, because of this infection still the lung tissue is not that much damaged. तो 0 to 3 weeks में diagnosis अगर करते हैं हम इस disease का, since we are studying a medical diagnosis, that's why I'm emphasizing on the diagnostic part and correlating with this pathophysiology with the diagnosis of this disease. So when the person has undergone a diagnosis, अगर हम उसका टेस्ट करेंगे 0 to 3 weeks, अगर उसको इन्फेक्शन हो गया, पहले तो उसको पता ही नहीं चलेगा. क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि इनिशियल वीक्स ऑफ दीज 3 weeks में उसको कोई सिम्टम नहीं होगा. इट्स जस्ट दैट आप
after 3 weeks the symptoms will start coming. That's why we are saying कि 3 हफ्ते से ज्यादा की खांसी. So now you can correlate, since you are also studying the molecular mechanism behind that. So why it is 3 weeks? Is because that take these 3 weeks we have been taken by this bacteria to being exposed to our body immune cells. Till 3 weeks, our immune system will not get activated. Why it is not get activated? Because the bacteria is very smart. It is being divided into these macrophages. It infects the macrophages. Of course, this is one. There are many macrophages. It's just a representation. So you imagine the bacteria actually jitne bhi numbers of bacteria has been inhaled by the person, it actually where it goes into the lungs and it goes into the alveolar macrophages, inside into the macrophages, and they keep on dividing within 0 to 3 weeks after the infection. That's why there is no symptom. Whatever the symptoms which you have talked about, which you know about associated with the disease, it doesn't come in 0 to 3 weeks, and also it is very difficult to diagnose this disease. टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आते हैं. क्यों नहीं आते? इसीलिए नहीं आते. ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया 3 वीक्स तक सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफेजेस के अंदर जाके डिवाइड करता है. आई होप आई एम क्लियर. यस क्लास? Yes, ma'am. Okay. Now what happens in the next stage? There's a primary pulmonary tuberculosis again, but what happened after 3 weeks? So here it is written after 3 weeks. Okay. ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आपको आगे भी याद आएगा. ऑफ कोर्स मुझे इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म एंड टू कोरिलेट विद द डायग्नोस्टिक, कि डायग्नोसिस में जो है कब वो उसकी डायग्नोस्टिक्स हो सकती है, कब जो है टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, कब नेगेटिव आ रहा है. सो यू कैन कोरिलेट विद दैट. सो व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर 3 weeks, and you will also understand what is this necrosis. Okay, and what is this cone focus and cone complex. So what is happening after the 3 weeks? If you look at this alveolar macrophages, तो क्या होता है? After 3 weeks, these macrophages they start processing these proteins, bacterial proteins, and they start presenting on their surface. क्या करते हैं? 3 हफ्ते के बाद macrophages जो है the antigen, that is the protein of the bacteria, it start coming presenting on the surface of these macrophages. Okay, so macrophages are also known as antigen presenting cells भी कहते हैं इनको. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसलिए बोलते हैं, क्या कहते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के बाहर से आता है, दे इनगल्फ दीज बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड दे अलार्म, वो एक अलार्म की तरह होते हैं, रेड अलार्म की तरह होते हैं ना, जैसे फायर अलार्म होता है ना. तो फायर अलार्म क्या करता है? फायर अलार्म और लोगों को अलार्म करता है that there's something wrong. So that's how these macrophages they work. They alarm our other body cells. दूसरे वाले body cells को बता रहे हैं कि listen, there is an infection here. So how they will tell? Of course, there is a molecular mechanism behind that. उनका molecular mechanism है उनका alarm. So what is that molecular mechanism? तो जब वो infect कर देते, when they engulf any foreign particle or foreign infectious agent, they start presenting they disintegrate their proteins. तो जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो क्या होता है, वो मॉडिफाई कर देता है उसके सेल सरफेस को, जो एल्वियोलर सेल मैक्रोफेजेस एल्वियोलर सेल सरफेस है. सो the antigen of these bacteria or the protein of these bacteria which is dividing these macrophages, now they are presented on these alveolar macrophages. Okay, so this is known as NTB. यहाँ पे लिखा है MTB antigen. So what is this Mycobacterium tuberculosis protein? So now these macrophages they start presenting and they start presenting these antigens on their surface, and this has been bind to these T cells. Okay, and then also they start producing after 3 weeks. There are other molecular signals, for example interleukin 12. So they tell these cells कोई foreign particle जो है, foreign substance जो है वो हमको invade किया है. So now with the help of these MHC class 2 molecule which is representing these antigens, they tell these T cells. वो T cells को क्या बता रहे हैं? वो T cells को ये बता रहे हैं now there is an infection, so you have to divide. So now after 3 weeks, the T cells are able to recognize the infection and they start dividing in response to these macrophages which are presenting these antigen on their surfaces, and also start releasing the interleukin 12 which
stimulate these T cells to divide, and these T cells, they start converting into Th1 helper cells. Okay, so that Th1 helper cells, they become active. When they become active after 3 weeks. Okay, after 3 weeks they become active. So here it is written as tuberculin positive hypersensitivity test. So after 3 weeks there is a one test which comes positive. अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है और 3 हफ्ते से पहले उसको अगर ये टेस्ट किया जाए तो वो नेगेटिव आएगा, बट 3 हफ्ते के बाद अगर उसको ये टेस्ट किया जाए तो वो पॉजिटिव आएगा. तो ये टेस्ट होता क्या है? बेसिकली इन दिस टेस्ट द पर्सन हु इज लाइकली टू बी इन्फेक्टेड, he or she get tested for the reaction or this hypersensitivity reaction which is going on in his body or her body. तो क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नली जो है purified protein which is known as PPD, I have already shown you in that diagram, is injected. वो purified protein isolate करके commercially available है, that has been isolated from that bacteria, और उसको क्या करते हैं, उसको स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं. The person who's infection who got the infection from the tuberculosis, and then they look at the reaction कि उसका क्या रिएक्शन होता है. तो अगर वो रिएक्शन शो कर जाता है और एक पर्टिकुलर एरिया, उसका जो एरिया डायमीटर देखते हैं कि कितनी एरिया में वो इन्फेक्शन हुआ है, उसका रिएक्शन हुआ है, एंड बाय लुकिंग एट दैट रिएक्शन इट कैन बी इंटरप्रेटेड कि उसको जो है टीबी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है इसका मतलब रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज देयर आर नो टीएच हेल्पर सेल्स विच इज रिकॉग्नाइजिंग दैट प्रोटीन विच यू हैव इंजेक्टेड. अगर उस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा? आपने वो जो प्रोटीन बाहर से दिया है बैक्टीरिया का, तो अगर उस पर्सन को इन्फेक्शन है तो उसके बॉडी में टीएच हेल्पर सेल्स होंगे और वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे एंड देन दे क्रिएट द रेडनेस. ओके, फटाक से रिएक्शन करेगा उस इंसान का बॉडी, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी these TH helper cells which is activated against that bacterial antigen which you have injected externally. So they will recognize that as an external and the body reacts very quickly. And the reaction tells that okay, the person has got the infection. अगर वो reaction red color का redness नहीं आएगा, then it means that person doesn't have these TH helper cells. It means he or she doesn't have that infection. Okay, so that's how by doing this test, it can be diagnosed, but it can only be diagnosed after the 3 weeks. Why? Because only after 3 weeks, the TH helper cells, they get stimulated and they formed against these MTB antigens. TH helper cells is specific to these antigens. Okay. So what happens after 3 weeks? Now these TH helper cells, when they are formed against these MTB antigens, they start secreting some factors which is known as, this is interferon, gamma interferons, and then these gamma interferons, they loop की तरह काम करते हैं, they act on again on these macrophages और वो उनको एक्टिवेट कर देते हैं और दूसरे macrophages को भी एक्टिवेट कर देते हैं. So this is known as activation of the macrophages. Now they help these macrophages in killing those bacteria and also activating other macrophages. Other means what? जो infected नहीं है, non-infected macrophages को भी activate कर देते हैं. Okay, so they activate these non-infected macrophages. So these non-infected macrophages, they by secreting other factors and by chemokinesis, they start killing those macrophages which are infected with the bacteria. ठीक है, तो नॉन इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस ने क्या किया, वो एक्टिवेट हो गए. किससे एक्टिवेट हो गए? जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस थे उन्होंने टी सेल्स को बोला कि इन्फेक्शन हुआ है. टी सेल्स दे बिकम modified, transform into the Th1 helper cells, and in turn these Th1 helper cells, they activated the non-infected macrophages, and now these non-infected macrophages, they are capable of identifying, okay, they are capable of identifying what? Those which are infected macrophages, and they start killing and eating these
मैक्रोफेजेस। सो मैक्रोफेजेस क्या है, हमारी बॉडी के पार्ट ही हैं, और उन सब सेल्स को, जो सेल्स इन्फेक्टेड हैं इस बैक्टीरिया से, so they start killing off all those cells because the bacteria is present inside our cells ना, तो बैक्टीरिया को तो मार नहीं सकते खाली, मैंने बोला ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। so whenever there is a cell mediated immunity is associated with any of the infection, it will kill the tissue, the whole tissue जहां पर infection होगा। so that's what these activated macrophages, they start eating and destroying those cells which are infected with the bacteria. And when the cells of our body, of our lung, they get destroyed, they have this cheesy appearance, white color का। और क्या होता है, जो जहां पर ये इन्फेक्शन हुआ है, तो वो टिश्यू तो डेड होने ही लग जाता है, and of course that also attract the other immune cells. Okay, so this complex is known as Gowan focus। हम इसको क्या कहते हैं, ये लंग में डेवलप हो गया, लंग में बन गया, so we are called as that Gowan focus। epithelioid granulomas भी कहते हैं इसको, here it is written, and that has been identified on the, ये diagnosis टीबी की इससे भी करते हैं, they took the lung tissue and make the slide, you all have studied the histological slides, okay, so they make the histological slides of the tissue and then they look for these formations on the tissue, lung tissue में, and then they are able to identify the infection, ये granulomas, which is known as the epithelioid granulomas। so what is this epithelioid granulomas, उनके जो सेंटर होता है, जो कोर होता है, वो डेड केसिएटिंग लंग टिश्यू होता है, और उसके सराउंडिंग जो है वो इम्यून सेल्स होते हैं, विच आर मैक्रोफेजेस, जो बड़े हो जाते हैं बिकॉज इन रिस्पॉन्स टू दैट infection। Okay, so giant macrophages, epithelioid cells, and then there are sensitized T cells। तो ये क्या कर रहे हैं, ये केस बना रहे हैं, इसीलिए उसको केसिएटिंग कहते हैं। केस क्यों बना रहे, so that बैक्टीरिया वहां से और दूसरी जगह को इन्फेक्ट नहीं कर पाए। सो दिस इज बेसिकली द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू कंटेन दिस इन्फेक्शन विद इन दिस रीजन। तो उसके रिस्पॉन्स में ये फॉर्मेशन हो जाता है टिश्यू का, राइट। So now if you have any doubt on this, you can ask, आप पूछ सकते हो अभी। मैम ये जो इंटरफेरॉन से जो एक्टिवेट करता है उसको मैक्रोफेज को, वो जो पहले से इन्फेक्टेड मैक्रोफेज है उनको केवल करता है या फिर सारे मैक्रोफेजेस को करेगा? सारे मैक्रोफेजेस को करता है, जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको तो करेगा ही करेगा, वो तो दे हैव टू डाई, ओके, सो दे विल डाई, and it also activated other macrophages as well which are not infected, which can fight with the infection, okay, so they start, हाँ, so they start, now they become bactericidal activity, तब जाके उनकी स्टार्ट होती है, जब वो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया को सर्वाइव करना है, सो इट इज वेरी स्मार्ट, so that's why once they infect the, जब 0 to 3 weeks में होता है, the macrophages they are not able to kill these bacteria, that's how they evade our immune system। so 0 to 3 weeks में macrophages or our immune system, it is not capable of containing this infection, but after 3 weeks it is able to contain the infection, depend upon the person's immune response। अगर पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स कॉम्प्रोमाइज्ड है ना, तो ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एक्चुअली ये नहीं होंगे एक्टिवेटेड, या लेस होंगे, और वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज इन्फेक्ट अस, हमारे में क्या होगा, आप में क्या होगा, 0 to 3 weeks ये चलेगा, क्या चलेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाएगा, इन्फेक्ट कर गया, नहीं अगर बाहर निकल पाया तो क्या होगा, उसके बाद 3 weeks के बाद देन मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल एबल टू किल द बैक्टीरिया, ठीक है। मैम उसके बाद से जो बाकी सारे एक्टिवेटेड मैक्रोफेज है, अगर उनमें से किसी कांटेक्ट में आए जो बैक्टीरिया है, तो क्या वो अलाउ करेंगे उसको एंटर करने के लिए? नहीं, फिर नहीं कर पाएंगे ना, दैट्स हाउ इट कंटेन। मैम एक तरीके से मैसेंजर, मतलब मैसेज पहुंच गया कि दे कैन नॉट एंटर एनी मोर। यस, तो दे विल नॉट, जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं उनको बेसिकली बैक्टीरिया नहीं इन्फेक्ट कर पाएगा because they are now activated, okay, so हाँ, so that's how, so again that depends upon कि आपका immune response कैसा है ना। activated macrophages means उस person में कितना immune response जो है elicit हुआ है, तो उस हिसाब से and how much is capacity of immune system to kill these bacteria, that also depends on
person's immune system. But process जो है molecular process यही है कि once they become activated, जब activated हो जाएंगे, then they are activated enough to kill all the infection, मतलब all the bacteria. तो वेरी एक्टिवली एक्टिवेटेड हो गए तो पूरा सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. अगर मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड हो गए, टी सेल्स दे प्रोड्यूस मोर ऑफ द टी एच हेल्पर सेल्स एंड देन दे आर एबल टू किल दीज बैक्टीरियाज एंड कंटेन ऑलरेडी इन्फेक्टेड टिश्यू एज वेल. सब कर लेते हैं वो, एंड नॉट एबल टू अलाउ दीज बैक्टीरिया to further infect the fresh macrophages. That's how they control the infection. Clear है? यस मैम. बहुत इंटरेस्टिंग भी है, पता है इसका मैकेनिज्म. बहुत स्मार्ट होते हैं. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत स्मार्ट भी है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है. इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है टीबी को ट्रीट करना. अभी किसी को गोन फोकस के बारे में नहीं समझ में आया? गोन फोकस मैम अब आगे वो नेक्रोसिस होगा तो फिर वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसी को बोलेंगे, जो एपिथेलॉइड. हाँ, एग्जैक्ट. हाँ, एपिथेलॉइड ग्रैनुलोमा, दैट इज नोन एज अ गोन फोकस. और हमारे लंग्स में जो होते हैं लिम्फ नोड्यूल्स भी होते, लिम्फ नोड्स भी होते हैं हमारे लंग्स में. तो अगर इन्फेक्शन में वो लिम्फ नोड भी शामिल हो जाता है, अगर इन्फेक्शन लिम्फ नोड के पास होता है ना, क्योंकि लिम्फ नोड इज एसोसिएटेड विद व्हाट, द इम्यून एक्टिविटी. ओके, तो अगर इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शियस एरिया में लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप उसको गोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कि गोन कॉम्प्लेक्स बन गया इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गोन फोकस एंड गोन कॉम्प्लेक्स. दो टर्म जो मैंने आपको बताए, गोन फोकस एंड गोन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. मैं आपको, आई विल आल्सो शेयर अ वीडियो विद, अगर मुझे इसका ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का वीडियो मिलेगा, पूरा वीडियो है पैथोफिजियोलॉजी का, आई विल शेयर इट विद यू. वो वाला देखूंगी, अगर तुम लोग देखने में इंटरेस्टेड हो. देखते नहीं हो एक्चुअली तुम लोग. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट 2-3 मोर स्लाइड्स एंड देन आई लीव यू. हाँ, यस. हाँ, यस. We see the videos you post. हाँ, क्या बोल रहे हो बच्चे? एक बार फिर से बोलो, सुनाई नहीं दे बच्चे. मैम मैं बोल रही हूँ, आप जो वीडियोस डालते हो हम देखते हैं. ओके, ओके, आई विल शो यू. जस्ट give me a moment. I'll just search. This is diagnosis part, this clinical presentation. It's estimated that about 2 billion people worldwide are infected with Mycobacterium tuberculosis, often just shortened to tuberculosis or simply TB. 2 billion is a lot of people, right? But even though they're infected, that doesn't mean that all these people have symptoms. The vast majority, about 90 to 95%, aren't even aware that they're infected. And this is because usually the immune system can contain it such that it isn't able to multiply, and often it remains latent or dormant, as opposed to active, which usually causes symptoms and means it can be spread to others. If the host immune system becomes debilitated at some point down the road, like with AIDS or some other illness, or as a person grows older, it can be allowed to reactivate, or basically wake up and become very serious, especially if it spreads throughout the body. Mycobacteria are an interesting bunch. They're slender, rod-shaped, and need oxygen to survive. In other words, they're strict aerobes.
they've got an unusually waxy cell wall, which is mainly a result of the production of mycolic acid. Because of this waxy cell wall, they're acid fast, meaning that it can hold onto a dye in spite of being exposed to alcohol, leaving it a bright red color when a Ziehl-Neelsen stain is used. The wall also makes them incredibly hardy and allows them to resist weak disinfectants and survive on dry surfaces for months at a time. Now, Mycobacterium tuberculosis is usually transmitted via inhalation, which is how they gain entry into the lungs. Now, we breathe in all sorts of virus and bacteria all the time, but we've got defenses to take care of most of them. For one, air that we breathe in is turbulent in the upper airways and drives most bacteria against mucus, which is then cleared pretty quickly. Ultimately, though, TB can avoid the mucus traps and make its way to the deep airways and alveoli, where we have macrophages which eat up foreign cells, digest, and destroy them. With TB, they recognize foreign proteins on their cell surface and phagocytize them, or essentially package them into a space called the phagosome. With most cases, the macrophage then fuses the phagosome with a lysosome, which has hydrolytic enzymes that can pretty much break down any biochemical molecule. TB is tricky though, and once inside the macrophage, they produce a protein that inhibits this fusion, which allows the mycobacterium to survive. It doesn't just survive though, it proliferates and creates a localized infection. At this point, the person has developed primary tuberculosis, which means that they have signs of infection soon after being exposed to TB. Even though it sounds bad, most people at this stage are actually asymptomatic or maybe have a mild flu-like illness. About 3 weeks after initial infection, cell-mediated immunity kicks in, and immune cells surround the site of TB infection, creating a granuloma, essentially an attempt to wall off the bacteria and prevent it from spreading. The tissue inside the middle dies as a result, a process referred to as caseous necrosis, which means cheese-like necrosis, since the dead tissue is soft, white, and looks a bit like cheese. This area is known as a Gone focus. TB also gets to nearby hilar lymph nodes, either carried over by immune cells through the lymph or by direct extension of the Gone focus infection, and causes caseation there as well. And together, this caseating tissue and associated lymph node make up the characteristic Gone complex. Gone complexes are usually subpleural and occur in the lower lobes of the lungs. The tissue that's encapsulated by the granuloma undergoes fibrosis and often calcification, producing scar tissue that can be seen on X-ray. This calcified Gone complex is called a rank complex. In some cases, although a scar is left over, the mycobacteria is killed off by the immune system, and that's the end of that. In other cases, even though they're walled off, they remain viable and are therefore still alive, but they're just dormant. If and when a person's immune system becomes compromised, like with AIDS or with aging, the Gone focus can become reactivated, and the infection can spread to either one or both upper lobes of the lungs. It's thought that this is because oxygenation is greatest in these areas, and TB being an aerobe prefers areas of greater oxygenation, right? Since they were previously exposed, the immune system's memory T cells quickly release cytokines to try and control the new outbreak, which forms more areas of caseous necrosis. This time, though, it tends to cavitate or form cavities, which can allow the bacteria to disseminate or spread through the airways and lymphatic channels to other parts of the lungs, which can cause bronchopneumonia. But it can also spread via the vascular system and infect almost every other tissue in the body, called systemic miliary TB. When TB spreads to other tissues, it causes complications related to the organs affected. Kidneys are commonly affected, resulting in sterile pyuria or high levels of white blood cells in the urine. It might also spread to the meninges of the brain, causing meningitis, the lumbar vertebrae, causing pot disease, the adrenal glands, causing Addison's disease, the liver, causing hepatitis, and the cervical lymph nodes, causing lymphadenitis in the neck, also known as scrofula. Testing for TB often starts with a pure... Okay, so that is the diagnosis part. Once we will discuss it, then you can watch, or I'll show you the next part of the video, right? So I hope now you understand Yes, ma'am. the pathophysiology of the disease and how it works. Even if you have any confusion, we can discuss over it, and we will end our lecture here. No problem with that.
for today it's enough. Okay, so we will discuss further about the diagnosis part in the next class. Diagnosis and prevention, all the very not. Prevention तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, since it's a communicable disease, it is always advisable for the communicable diseases. वो common रहता है कि spread of disease को कैसे आपको contain करना है, रोकना है. Better hygienic conditions. The person who are having an active disease must isolate. Initial mass screening of the population where the population is at a higher risk. All these comes under the prevention of the disease. Yes, class? So we will talk about what is the fate of the primary tuberculosis in the next class. So if you have anything which you are not able to get it, we can even further discuss over it. No problem with that. Yes, class. हो गया, समझ आया सबको अभी? मैम Yes, हाँ ma'am. मैम Yes, ma'am.